Jai Hind to all of you, and once again, welcome to Defense Mania. I am Vasudha Singh, and I definitely welcome all of you onto this new video. And the topic of the video is to prepare for written exams as well as SSB together. Yes, guys, it's very feasible that you can prepare for your written exams and your SSB together. You do not have to wait for your SSB call letters because when you give your exams, there is a time period for 1.5 month, and then you start thinking whether my exam I have cleared or not. But so you have to understand this fact that you do not have to wait for your SSB call letter. You have to prepare for your written exams as well as your SSB together. It will work simultaneously. All right, guys. So let's start with the video. So once again, I'm welcoming all of you onto Defense Mania, guys. This is a brand new video, and definitely, if you follow this video, it will definitely help you. All right. So let's get started with it. All right. So yes, guys, our main motive is to serve the nation, and that too donning that uniform. Please remember that you are going to serve the nation as well as you're going to don this wonderful uniform. All right, but for that you have to work really smart as well as you have to work really hard. All right, you have to do that because nobody else will do it for you. So please remember that in order to don that uniform, you got to have smart work as well as you got to work really hard. That is how you will serve the nation, all right, in that uniform. All right. So yes, guys, in this video we will be talking about the written examinations का क्या क्या schedule रहता है, SSB का क्या क्या schedule रहता है, then your daily time division, आपका daily time कहाँ कहाँ पे जाता है, and आप उसको कैसे balance कर सकते हैं. All right, then we will be talking about your balance and consistency. All right, then yes, I have a very wonderful plan for all the aspirants who are non-working professionals. In order to say that very perfectly, the aspirants who are right now students, all right, or are just preparing for exams. All right, so how you can do that, it's very important to just balance your professional and personal life. All right, and yes, one more thing, the next point is working professionals के लिए आपका क्या schedule रहना चाहिए. That will be covered in this video in a very appropriate way. All right, guys, so let's get started with it. So yes, the very first thing, guys, the very first thing, आपका written का जो exam होता है, written exams, आपके defense exams, I'm specifically talking here about your defense related exams, and that actually includes your CDS exam, then your AFCAT exam, then your NDA exam, then your TA ka exam, and then there is INET. INET is also there. ACC is also there, as well as you have direct SSB call letters also. All right. So there are almost 6 to 7 defense related exams that actually gives you a opportunity to serve the nation. All right. You have to firstly clear the written exam. आपका दो procedure रहता है. The very first is you have to clear the written exam. All right. And then you have to clear the SSB. ठीक है, उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं गाइज. यू गो फॉर योर मेडिकल्स एंड देन योर मेरिट लिस्ट. योर मेरिट लिस्ट एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिटन एग्जाम्स के मार्क्स एंड योर एसएसबी एग्जाम्स के मार्क्स. ऑल राइट, सो आपके फर्स्ट एग्जाम्स कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज योर CDS एग्जाम दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस. ऑल राइट, एंड ये कब कब होता है? जनरली इट कम्स इन द मंथ ऑफ February एंड November. ऑल राइट, साल में 2 बार होता है, 2 times it is there, and it comes in generally in the month of February and November. All right, due to COVID restriction ये कहीं ना कहीं आगे forward हो गया है, postpone हो जाता है, but it never get cancels out. Cancel कभी नहीं होगा, हमेशा postpone होगा because of some emergency issue or because of some curfew or your COVID situations. ठीक है, generally this exam is actually conducted in the month of February and November, 2 times a year. All right, and similarly guys, आपका AFCAT exam that basically stands for Air Force Common Admission Test, ये होता है February and August के महीने में, ठीक है जी. And the next defense examination is your NDA exam, National Defense Academy examination, that is basically your 12th based
12th बेस्ड आप कैसे जाएंगे डिफेंस सर्विसेज में, आप कैसे फोर्थ ज्वाइन करेंगे. एंड दिस एग्जाम एक्चुअली हैपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज वेल एज September. This also happened two times. This also happened two times. And CDS, guys, CDS as well as AFCAT is based upon your graduation level. Is based upon your graduation level. All right. Please remember the fact. And yes, the next part, the next schedule is for your CAPF exam. CAPF is basically for joining CISF हो गया या ITBP हो गया, ठीक है, SSB सशस्त्र सेना बल, ठीक है. These are different alliance of paramilitary forces, all right, as well as police forces. So yes, CAPF का exam basically साल में एक ही बार होता है, please remember, and it comes in the month of August, all right. And yes guys, CAPF जो है आपका basically it stands for Central Armed Police Forces Examination, all right. The next is your INET examination. This is a very new examination in the curriculum because ये 2019 से ही कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है. उससे पहले ये कंडक्ट नहीं हो रहा था. उससे पहले डायरेक्ट एंट्रीज आती थी एसएसबी के लिए फॉर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी, ऑल राइट. एंड यस, ये होता है जनवरी में एंड ये होता है जून में, ऑल राइट. साल में दो बार होता है, एक जनवरी में और एक जून में, ऑल राइट. These months of your conduction of your exams can actually move ahead because of restrictions in various states or COVID implementations, all right. So please remember that thing very well. And guys, आपका टीए का एग्जाम बेसिकली होता है टेरिटोरियल आर्मी के लिए एंड इसका एग्जाम डेट हमेशा शिफ्ट होता है, ठीक है. इट इज नॉट इट कम्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. But all these exams, I'm talking about your CDS exam, your AFCAT exam, your INET exam, as well as CAPF exam, then your yes, these all exams are basically what? These are graduate level exams. ये सारे graduation basis पे होंगे. टीए भी आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, बट ये जो है ना, ये वाले एग्जाम्स सीडीएस, एफकैट, आईनेट, सीएपीएफ, दे हैव अ रेगुलर कंडक्शन, ठीक है. इनका रेगुलर कंडक्शन रहता ही रहता है. टीए का रेगुलर कंडक्शन नहीं होता है गाइज. द फॉर्म्स कम्स आफ्टर इन अ वेरी irregular way, all right. So and the next one is your ACC entry, that is basically for all the soldiers in your defense. जो पहले से डिफेंस में सोल्जर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कमीशन रैंक्स के लिए, ऑल राइट. दे कैन अप्लाई फॉर द कमीशन रैंक्स, ठीक है जी. सो यस, इन सारे के सारे एग्जाम्स में, इन सारे के सारे डिफेंस एग्जाम में बेसिकली आपका सिर्फ एनडीए एग्जाम ऐसा है जो 12th बेसिस पे है, ऑल राइट. बाकी सारे एग्जाम्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, ऑल राइट. सो गाइज यस, द वेरी फर्स्ट थिंग, तो पहले तो सबसे पहले यू हैव टू मेक इट वेरी श्योर दैट इट इज फीजिबल. इट इज फीजिबल मतलब ये आपके हाथ में होता है दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर रिटन एज वेल एज योर एसएसबी इन अ वेरी वेल डिफाइंड वे. इसका आपको हमेशा ये लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ दिस सॉर्ट, दैट फर्स्ट लेट अस फोकस अपॉन आवर रिटन एग्जामिनेशन. अगर वो क्लियर होगा फिर हमें एसएसबी कॉल लेटर आएगा. So firstly guys, this thought has to go from your minds. The first thought that you should actually acquire, that why exactly I'm joining defense forces. If that vision is very very clear, अगर आपको पता है कि why do you want to join it, then there is no scope of procrastination, then there is no scope of being lazy around your goal, ठीक है. Then you will be of the sort that I want to do each and everything each and every day, ठीक है. You will not depend upon others to motivate you, you will be internally motivated. That is how that spark actually is visible in your eyes, in your body language, and that actually reflects in your ssb, all right. So firstly you have to make it very very sure that what exactly your vision is, all right. अपनी vision clear हो गया कि मुझे क्यों join करना है, कि मुझे करना है तो करना है. There is no other second thought, all right. उसके बाद just remember that it is very very feasible for you to prepare for your written exams as well as ssb exams. Firstly you need to understand the thought, you have to say it to yourself because nobody else will say it for you, ठीक है. You have to say it that I'm going to prepare for my written exams and my ssb. I'm going to do each and every daily basic necessity of mine, as well as I'm going to be a non-working professional or a working professional depending upon your own
own पर्सनालिटी, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एज इन यू आर अ स्टूडेंट or you are doing any kind of a course or an internship, it is very very feasible for you to manage your time, and yes, you can prepare for your SSB. All right, at the same time your writtens as well as your SSB can be prepared at the same time, guys. Believe me with this fact, because the all the things is all about time management. टाइम मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ है, कितना टाइम मैनेज करते करेंगे आप, एंड कैसे कैसे मैनेज करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज to have a clear vision, to have a very very clear vision that what exactly I want to do, why I'm so much interested to join the forces, why I want to don that uniform. If that thing is very very clear, all right, then you won't have any problem in maintaining a time or a timetable. You will be disciplined. आपको अंदर से ही वो energy मिल जाएगी. You do not have to go and have a look at various videos. If you are very very focused, you know why exactly I'm doing it. So everything else will be taken care of. All right, so the very first thing is to have a vision. All right, vision कर लिया आपने clear. उसके बाद आता है the next process. The next process is basically what is to आप उसको क्या क्या उसके लिए जरूरी, लाइक व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज, व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज टू गेट देयर. ठीक है, आपका अगर विजन है डिफेंस, अगर आपका विजन है कि मुझे फौज ज्वाइन करना है, तो आपको पता चल गया आपका विजन है डिफेंस ज्वाइन करना है, आपको यूनिफॉर्म पहनना है डिफेंस का. ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि उसका नेसेसिटी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है. प्रोसेस ये है गाइस कि आपको रिटर्न के लिए बैठना है एंड उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बैठना है. ठीक है, यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी वेरी काम सो दैट इट वर्क्स रियली एफिशिएंटली. ठीक है, वन स्टेप एट वन टाइम. ऑल राइट, then after that, when you know that what exactly is to be done for written and exactly to be done for SSB, start implementing that process in your daily routine. स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रोसेस इन योर डेली रूटीन. ठीक है, डेली रूटीन में जितना लाओगे उतना आप एफिशिएंट बनोगे, उतना यू विल बी मच मोर क्लोजर टू योर गोल. ऑल राइट, सो जस्ट रिमेंबर, if we talk about legends, if we talk about, for example, Muhammad Ali, right? So he was not Muhammad Ali till certain age. He was not Muhammad Ali till 20-25 years. He was into practice. He practiced continuously for 10 to 15 years to get to that particular point. So he used to practice each and every day. He used to implement everything that he wants to do each and every day. So it's a long going process. You guys need to understand it. So 10 दिन में आपका written exam clear हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा clear. That's not possible, guys. That's not possible until and unless अगर आपने पीछे से cover ना किया हो. So you have to be regular. You have to be consistent. It's very very simple. Every video that tells you just prepare for your exam in just a few amount of time, in 15 days or 10 days, it's absolutely lie, guys. Basically guys, ये झूठ होता है because इसके साथ you have to understand कि आपका पीछे से, आपके पीछे पास्ट से आपका काफी अच्छा प्रेपरेशन चल रहा होगा, उसके बाद you can come up with 10 days preparation or 15 days preparation. ऑल राइट, अगर आप फर्स्ट टाइम एफकैट के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट टाइम एफकैट के एग्जाम के लिए बैठते हैं, सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 months फॉर इट्स प्रेपरेशन. ठीक है, बेसिक्स उसके समझने के लिए, देखने के लिए कि पेपर कहाँ से आता है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, टू सिलेक्ट इट, टू स्ट्रेटेजाइज इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. But if you are thinking that in 10 to 15 days you will be covering all the concepts and you will be clearing the exam, so my dear, you are absolutely wrong in this concept. कॉन्सेप्ट बनाने में ही आपको टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है टू स्कोर वेल. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. सो इम्प्लीमेंटेशन अपना बहुत ही अच्छा रखो. जस्ट कीप योर इम्प्लीमेंटेशन वेरी वेरी वेल. ऑल राइट, and then absolutely you will achieve success. You will achieve success. All right, so yes guys, the circle of success, I want to talk about it also in apart from moving ahead with the next slide. देखिए guys, when you talk about any successful person now, when you talk about any successful person, there is a ability, there is a ratio for experience, his strength, his or her strengths, behaviors, then technicality. All right, success profiles, these are the success profiles. So you have to balance out each and everything. All right, and success, if I say here success, right, success can never be a
accompanied विदाउट फेलियर. अगर सक्सेस है तो फेलियर जरूर हुआ होगा. इफ यू आर हाईली सक्सेसफुल, आपको बहुत ही ज्यादा फेलियर्स भी हुए होंगे. एंड बेसिकली आपने उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेंथफुल रखा है, उस टाइम पे अपने आप को करेजियस रखा है, उस टाइम पे आपने अपनी विजन को याद रखा कि व्हाई एग्जैक्टली आई एम following this journey. All right, so you have to have very clear vision, and you do not have to get a second thought that if I won't be able to do this, then I will do that. Firstly, concentrate all your energy, all your efforts onto one particular thing, and do that thing each and every day. That is how you make up your things. That is how you make up a personality. Personality is something that actually takes a lot of days and months and years to get developed. All right, so to have that, you have to have proper consistency in your efforts. All right, so the next part, guys, आपका next part है services selection board का schedule. ठीक है जी. आपकी एसएसबी कब कब आती है? आपकी जो एसएसबी होती है ना गाइस, वो इसका कोई भी पर्टिकुलर मंथ नहीं होता है कि जनवरी के महीने में ही आएगी या अप्रैल के महीने में ही आएगी, ऐसा नहीं है. इट एक्चुअली गोज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. इट एक्चुअली गोज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. ऑलराइट, बिकॉज आपका जब मान लीजिए अगर आपका पेपर है फेब्रुवरी में, ठीक है, उसका आपका रिजल्ट आता है मान लो अप्रैल में आता है. ठीक है, अप्रैल में आता है, फिर आपकी जो एसएसबीज होंगी वो मई से स्टार्ट होंगी. मई से लेके इट विल गो ऑन टिल अक्टूबर. फिर उसके बाद आपके मेडिकल्स भी होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक 1 year. मतलब आपका रिटन का एग्जाम एज वेल एज आपका एसएसबी, आपके मेडिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग टेक्स 1 year टू बी completed properly. So for SSB there is not a particular schedule. SSB for every entry goes throughout the year. All right, so please remember this fact that if you are thinking कि मैं थोड़ी देर के बाद प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी, so please think again, because whatever you are doing right now, it is for your own future. ठीक है, whatever steps you are taking, either you are wasting your time or using your time effectively, please have this notion in your mind that why exactly I'm wasting my time, why exactly I'm using my time effectively. Because whatever you're doing right now, that will be shown to you, that will come into your future. All right, so please make sure that you are very consistent, you are using this time. देखिए guys, 20 से 25 साल and 20 से like 28, 29 maximum, these are the basic years to make your career as far as Indian society is concerned. All right, so you have to make it. If you are spending your time on useless things, for example, if you are youtubing a lot, if you are youtubing or a lot, as well as you are using WhatsApp, Instagram, that is a virtual world. Please have at least half an hour every day, that's it, not more than that. Please do not spend whole of your days on to that particular part, because that won't help you. और आप क्या कर रहे हो, आप किसी और का फ्यूचर नहीं बना रहे हो, आप अपना ही फ्यूचर बना रहे हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग very clearly. You guys are mature enough, so please understand it. All right, so yes, thereby meaning you do not need to just wait for your SSB. It's all a process that goes throughout a year. ये एक प्रोसेस है जो पूरे पूरे साल चलता है. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिटन्स एज वेल एज योर SSBs टुगेदर. ये वीडियो है ही आपका कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पहले मैं आपको बता रही हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. ऑलराइट, सो यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, प्रिपेयर फॉर योर SSB along with your written exams. That's very important. Do not wait for your SSB call letter. Prepare so well for your written exams that you are confident कि yes, मेरा पेपर क्लियर है, and that too with good amount of marks. You should have that confidence. उसके बाद आपका पेपर क्लियर है, you are not waiting for your SSB call letter. You are confident enough that I have studied really well and my paper is, I'm clearing my paper in a good way, with good marks. All right, फिर you will not wait for your SSB call letter. SSB call letter आने से पहले ही आपने 90% प्रेपरेशन अपना कर लिया होगा. ऑलराइट, सो गाइस, आपका डेली टाइम मैनेजमेंट किस पे जाता है? ठीक है, आपका डेली टाइम मैनेजमेंट किस पे जाता है? द वेरी फर्स्ट इज योर डेली बेसिक नेसेसिटीज. आपकी बेसिक नेसेसिटीज, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग, ईटिंग फूड, socializing and going out, or as well as going for shopping, WhatsApp, Instagram, these are basically your necessities. आप कहीं ना कहीं you have to be social also. All right, you cannot be secluded. So इसको आपको balance करना पड़ेगा.
if you think that you are sleeping 8 hours a day, but that's really less for your day, मतलब आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, so sleep 5 hours, sleep 6 hours. That actually depends upon you. All right, that actually depends upon you. Firstly, guys, understand we guys are very very mature, as well as we guys are young enough. ठीक है, even if we will be having one hour less sleep, अगर हम 1 घंटा भी कम सोएंगे, तो obviously you can utilize that 1 hour in your productivity, you can utilize that 1 hour optimally. ठीक है, so that is one thing that you need to focus. If you are talking about your AFCAT exam साल में 2 बार आएगा, कोई भी एग्जाम देख लो साल में, जो भी मैंने आपको बताए हैं, these exams come at a particular time. ठीक है, सो डू नॉट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर लास्ट डेट कि आप अपना लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करोगे. नो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जो हो गया है वो हो गया है. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट वंडरफुल थिंग्स दैट यू कैन अचीव. ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो डेली बेसिक नेसेसिटीज हैं, यू कैन एक्चुअली हैव अ वेरी गुड बैलेंस ओवर दीज थिंग्स. अगर लग रहा है कि 8 घंटे नहीं सोना चाहिए, उठ जाओ और पढ़ो बैठ के. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इन इंडिया इज competing with you are competing with each one of you. ठीक है, एक दूसरे से आप compete कर रहे हो. मान लो if you are sleeping, another person is awake, and the other person is giving a previous year paper, another person is practicing some maths question. So just analyze it. All right, so do not wait for particular thing. This is your goal, this is your path, you have to achieve it. All right, then the next is your daily time management. if you are a working professional, अगर आप working professional है या आपकी job है, I will be telling you that how do you actually prepare for your writtens and your SSBs together. Then yes guys, you have to give your exercise. आपको exercise करने के लिए at least you have to give half an hour or 1 hour each and every day, because it's your body. पढ़ के काम कर करके it will not grow, and yes, it will be really lazy and procrastinated. But if you are into physical activity each and every day, it will increase your stamina, it will increase your confidence, it will relax you, as well as it will give you a good body posture that is really really required to have a good personality. So please have at least half an hour or 1 hour daily activity each and every day. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही 2 घंटे आपने रनिंग कर लिया या 2 घंटे आपने साइकिलिंग कर लिया. just go for half an hour, but the main thing is your consistency कि आप रोज करें, एक भी दिन उसको मत छोड़ो. ठीक है, then you have your homely और office activities. होमली एक्टिविटीज किन के लिए? जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो कोई इंटर्नशिप या कोर्सेज कर रहे हैं. एंड ऑफिस की एक्टिविटीज उनके लिए जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क ऑल्सो ना, यू विल बी हैविंग समथिंग professionally to do. All right, so this is something that is covered into this portion, this section. Then you have to do academics में आपका आ गया स्टूडेंट्स के लिए, जो आप पढ़ते हैं, अपने कॉलेजेस के लिए पढ़ते हैं, इंटर्नशिप के लिए. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एनीवन दैट इज प्रिपेयरिंग इट डजंट मीन दैट पर्सन इज अ फुल ग्रेजुएट. some persons will be undergraduate also, तो उनके लिए भी उनको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है. उनकी कॉलेज क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन होता है. सो यू हैव टू मैनेज द थिंग्स. दिस इज अ सर्कल दैट एक्चुअली टेल्स यू योर डेली रूटीन. दिस इज अ सर्कल दैट एक्चुअली टेल्स यू योर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ऑलराइट, उसके बाद गाइज यू हैव टू एसएसबी का प्रेपरेशन एंड रिटन एग्जाम्स जो आप दे रहे हैं, उनका प्रेपरेशन भी आप एक दिन में प्रॉपर कर सकते हो. दिस इज सर्कल ऑफ your daily routine. ठीक है, everyone can achieve this. All right, and that's your miscellaneous activities are also there. So yes, this is basically a circle of your daily routine, but yes, you can definitely achieve this circle in like really good, in a really good way, in a really optimal way. ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. You can be regular into every sections that I have mentioned in a very wonderful way. All right, so guys, these are some points to remember. That consistency is the key. मान लीजिए, अगर आप आज half an hour, if you study half an hour अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, एंड अगर आपके पास you have 2 months for your preparation.
ठीक है. You have 2 months for your preparation. So it means you will be almost, अगर रोज आधा आधा घंटा पढ़ते हो, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, मतलब 60 days हैं आपके पास. 60 days में आप हाफ एन आवर कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट यू हैव फुल 30 hours. You have full 30 hours of maths. ठीक है. यू हैव फुल 30 hours ऑफ मैथ्स की प्रैक्टिस. ठीक है. ठीक है. ठीक है जी. तो बेसिक चीज ये है कि ऑब्वियसली यू विल नॉट स्टडी फॉर हाफ एन आवर मैथ्स. आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन पार्ट. तो द मेन थिंग इज दैट half an hour today, half an hour tomorrow, half an hour day after tomorrow, then this is consistency. This is consistency कि आप इसको रोज उसी उसी इफेक्ट में पढ़ो और उसमें चेंजेस लाओ कि अगर कल जो गलती की है वो आज ना हो, बट आप उसको पढ़ो, रोज पढ़ो. ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, 10 दिन ब्रेक लिया, फिर उसके बाद पढ़ा. नथिंग, देर इज देन नथिंग दैट विल गो इन टू योर माइंड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट that consistency is the key. Consistency and being disciplined about anything is the key. All right. Then the second point is, guys, you got to प्रायोरिटाइज योर गोल्स. आपके जितने भी गोल्स हैं आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू. आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, कि मुझे इतनी देर में मुझे ये अचीव करना है, इतनी देर में मुझे ये चीज़ करनी है. बिकॉज यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. आपको बताना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, एंड देन यू हैव टू डू दैट वर्क अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, for right now your exams are coming, your least priority should be your sleep. Your first priority should be really working hard towards your exams. All right. So please, ऐसा नहीं है कि आप सोते ही रहोगे and you don't prepare anything about your exam. प्लीज इसको वाइसी वर्सा मत करना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका सबसे ऊपर जाए लिस्ट में और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे नीचे आए लिस्ट में. डू नॉट डू दैट. ऑल राइट. टेक अप द गोल ऑफ हायर प्रायोरिटी एंड कंप्लीटेड फुली. एक एक करके गोल्स अपने कंप्लीट करो एंड टिक मार्क करो. ऑल राइट. यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली कोई भी काम कर रहे हैं गाइज, अपनी पर्सनल लाइफ भी आपको चलानी है. यू कैन नॉट जस्ट रन योर पर्सनल लाइफ एंड यू कैन नॉट जस्ट रन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. दोनों में एक बैलेंस होगा. बिकॉज अगर बैलेंस है, देन यू विल बी जॉयस, देन यू विल बी हैप्पी, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, देन यू विल एक्चुअली लव योर डे इन एंड डे आउट. ठीक है. आपको हर एक चीज़ पसंद आएगी. बट अगर आप प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे हैं एंड पर्सनली यू आर साउंडिंग वेरी लो, so it will definitely affect your professional life also. You need to understand it very clearly. You have to balance your personal and professional life by doing what? By just simply talking to yourself, simply knowing the requirement of that particular situation and acting according to that situation in a very effective way. Apne just ask your mind and your heart, just balance both the things and you will definitely get an answer, and then just implement it. All right. And yes, start maintaining a diary. Start maintaining a diary for daily goals and achieve your daily goals on time. अपनी डायरी पे लिखो इन बुलेट्स पॉइंट्स पे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. जैसे आपने सारे काम करे, पहला काम किया उस पर टिक मारो, दूसरा काम किया उस पर टिक मारो. ऐसे ऐसे अपने सारे दिन के सारे काम प्लान करो. ठीक है. प्लान करो और उसके बाद जस्ट टिक देम. जब कंप्लीट होता है जस्ट टिक देम. इट विल एक्चुअली गिव यू हैप्पीनेस एंड it will give you confidence to give you 100%, give your 150% on the next day. All right. And yes guys, you need to understand, you actually need to understand one thing, that nobody is perfect. Be comfortable with your imperfections. Every day add a bit to your goal or yourself. ठीक है. Everyone, even I, even you, everyone in this world is imperfect. अगर आज कुछ गलती करते हो किसी भी चीज में, just make it sure, just talk to yourself that I will not make mistake, I will not make this mistake afterwards. This is the last time I have made this mistake. इसके बाद I will not make that mistake. So this is how you basically become comfortable with your imperfections. ठीक है. We are human beings, we are full of imperfections. So please, instead of just focusing upon your imperfections, correct them each and every day. ठीक है. So every day you have to add a bit to your goal as well as to your own personality also. All right. And the next point is, guys, do not dwell on your past or fear of failure in the future. जो गाइस पास्ट में हो गया, दैट हैज टू बी केप्ट इन योर पास्ट. मेक पीस विद योर पास्ट. जो भी होता है, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फॉर यू.
जस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट, ऑलराइट. सो डू नॉट पास्ट पे मत बैठे रहो कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू दी फोर्सेज एंड वट एवर द थिंग इज, डो नॉट ड्वेल ऑन टू इट. उस पे ही मत रहो, बिकॉज टाइम इज टिकिंग ईच एंड एवरी डे. एंड येस, and do not have the fear of failure in the future. If you are looking out for a goal, if you are moving out for a goal, if you are working out for a goal, obviously you will fail. Obviously you will fail. किसी भी legend, किसी भी highly successful person का अगर आप डाटा उठाएंगे, बायोग्राफी उठाएंगे, they might have actually they might have actually failed thousand number of times, but still they continued their journey because they really wanted to do something. They really wanted to do something. So they were not dwelling onto their past, as well as they were not having the fear of failure in the future. So please make balance between it. And yes, जो आपके पास आज है आप वो करो. आज अपनी डायरी पे ये लिखो कि मुझे ये करना है. I have these number of hours. I will do all of these things. So do that. Do that. All right. Yes, increase your belief system and implement it in your every field of life. Guys, you need to believe in yourself. Belief system आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. You have to believe in yourself. Nobody like a legendary person or any person who is successful, अगर उन्होंने अपने अंदर कुछ बिलीफ नहीं रखा होता ना कि आई एम केपेबल ऑफ इट एंड आई कैन डू दिस, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज वो उस पोजिशन पे नहीं होते. So you need to have a very very brilliant belief system. You have to believe in yourself कि yes, I'm capable enough, I can do this. I will mistakes, but I will overcome all the mistakes. All right. So guys, the next part is your working part. अब आपने ये तो जान लिया कि आपको क्या क्या अपना माइंडसेट रखना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क. आपकी वर्क जो होता है ना गाइस, बेसिकली दो टाइप का है. एक होता है आपका स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क. You have to create a balance. You have to create a balance between both of these, because गाइस, स्मार्ट वर्क अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करते रहोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे. मान लो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू एन एसएसबी एंड यू फेल्ड फॉर एग्जांपल, यू फेल्ड 5 नंबर ऑफ टाइम्स, बट आप घर आके कभी कभी सोचते ही नहीं हो कि मैंने गलत क्या किया, कभी स्ट्रैटेजाइज ही नहीं करते हो, कभी इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते हो कि मैंने गलत क्या किया, एंड हर एक अटेम्प्ट में आप वही गलती कर रहे हो. सो सॉरी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, because you are a human being and you can't just keep on failing and failing. You have to understand that why exactly I'm failing. मेरे से क्या गलती हो रही है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रही. बिकॉज बिलीव मी गाइज, ऑल असेसर्स इन दी एसएसबी आर देयर टू सेलेक्ट यू. वो आपको सिलेक्शन के लिए ही बैठे हैं आपके. बस द थिंग इज दे आर लुकिंग आउट फॉर वेरियस क्वालिटीज एंड यू हैव दोज क्वालिटीज. यू गाइज हैव दोज क्वालिटीज. ठीक है जी. सो प्लीज, इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग हार्ड, 90% हार्ड वर्क कर लिया, जस्ट हैव स्मार्ट वर्क. अपना दिमाग दौड़ाओ. भगवान ने हमें सबसे ऊपर दिमाग दिया है. दिमाग को चलाओ कि मेरे से क्या गलती हो रही है, इसको मैं और स्मार्टली कैसे कर सकता हूँ. डू नॉट ड्वेल ऑन टू योर पास्ट. उस पर बैठे मत रहो. आगे देखो कि ये मेरे से मिस्टेक हो रही है, उसको समझो मिस्टेक को, एंड इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. इंप्रूव कैसे करोगे? एकदम से नहीं, डेली रूटीन में उसको इंप्रूव करोगे. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्मार्ट वर्क एंड योर हार्ड वर्क. ठीक है. स्ट्रैटेजाइज योर गोल अचीवमेंट इनटू सेवरल स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ. आपके हिसाब से आपको देखना है कि मेरा क्या गोल है, और उसको पार्ट्स में डिवाइड करो. एंड उसको फिर डेली रूटीन में लाओ. एंड प्लीज स्ट्रैटेजाइज इट, प्लीज इंट्रोस्पेक्ट इट कि क्या गलती हो रही है, बिकॉज अदरवाइज यू विल कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक. ऑलराइट. इट हैज टू बी an improved test, improved SSB over the last SSB or your test. ठीक है. एक improved version होना चाहिए हर टाइम. एंड येस, योर हार्ड विल is always there. आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी guys. There is nothing else except hard work. So after strategizing onto your goals, कि आपने पता चल गया कि ये मेरे goals हैं. मान लो this is your goal 1. ठीक है. आपने लगा लिया कि इस गोल में 1 2 3 4 5 चीजें करनी है. ठीक है. So you know that these are the 5 things that I need to do it. इसको आप लेके आओ अपनी डेली रूटीन में. डेली रूटीन में आप इसको लेके आ जाओ, बिकॉज एनीथिंग दैट यू वांट टू डू हैज टू कम इनटू योर डेली रूटीन. ठीक है. फिर उसके ऊपर आप मेहनत करो. इम्प्लीमेंट इट बाय डिवाइडिंग योर वर्क इनटू डेली, वीकली, मंथली गोल्स. ठीक है. डेली करो, फिर उसको इतना आपको डेली करना है कि आप उसको वीकली भी करोगे, फिर उसको मंथली भी करोगे, and फिर you will definitely achieve your goal. All right. You have to make sure that your daily routine is actually a very compressed version of your smart work. All right.
So the next part is very very important, guys. Schedule to be followed by non-working professionals. Here I'm specifically talking about students. स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ. स्टूडेंट्स या कोई भी बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई कोर्सेज कर रहे हैं, और आर अंडर ग्रेजुएट और आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जाम. सो गाइज, फर्स्टली जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके एकेडमिक्स पे 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको रोज देना पड़ेगा अपने एकेडमिक्स पे, मतलब अपनी पढ़ाई पे, स्टडी वाले पार्ट पे आपको देना ही देना पड़ेगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंसिस्टेंट एफर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंसिस्टेंट एफर्ट. ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 10 दिन नहीं किया, फिर उसके बाद फिर से किया. नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, रोज किया. You have to give at least 7 to 8 hours to your study, whatever exam you are studying for. ठीक है. आपके डेली बेसिक एक्टिविटीज में आपको जनरली 10 से 12 घंटे लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट विल इंक्लूड योर स्लीपिंग, that will include your like food breaks. ठीक है, food breaks. That will include your mobile पे अगर आपने you have to see something, anything that is your daily necessity, that should be covered into 10 to 12 hours. All right. एंड यस, फॉर फिजिकल एक्टिविटी आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए, बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग बट यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव. एंड फिजिकली एक्टिव आप जनरली एक्सरसाइज करने से ही बनते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट ईच एंड एवरी डे. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अभी कोविड चल रहा है, सो यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इन योर होम. इन योर होम यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस देखो एंड जस्ट डू इट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. एटलीस्ट फॉर पहले 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 20 मिनट पे आओ, फिर 30 मिनट पे, फिर ऐसे ऐसे करते करते उसको इंक्रीज करो. दिस इज हाउ यू डू इट, एंड दैट टू ऑन अ कंसिस्टेंट एफर्ट. एंड यस गाइस, टॉकिंग अबाउट योर एसएसबी प्रेपरेशन, एसएसबी प्रेपरेशन को आपको एटलीस्ट इफ यू आर अ नॉन वर्किंग प्रोफेशनल आपको 1.5 आवर्स से 2 घंटे आपको देने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट. देखो, एक पैटर्न देख लो, अपना पैटर्न देख लो. दिस विल बी वैलिड फॉर योर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो. अगर आप 1.5 आवर्स से 2 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे अगर आप रोज दे रहे हैं, सो एसएसबी में आपका क्या क्या है? स्क्रीनिंग प्रोसेस, देन यू हैव योर साइकोलॉजी, ठीक है जी, देन यू हैव योर इंटरव्यूज, एंड देन यू हैव योर जीटीओज. सिंपल है, सिंपल है. ठीक है, तो 2 घंटे हैं गाइज. 1 घंटा साइकोलॉजी टेस्टिंग कर लो, 1 घंटा साइकोलॉजी टेस्टिंग कर लो, और उसी दिन 1 घंटा आप लगा लो अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस पे. स्क्रीनिंग प्रोसेस में अपना OIR भी सॉल्व करो और अपना PPDT के ऊपर भी कंसंट्रेट करो. PPDT की स्टोरीज भी बनाओ और उसको नरेट भी करो. सो 1 आवर यहाँ पे, 1 आवर यहाँ पे, 2 घंटे हो गए. नेक्स्ट डे अपना फोकस करो इंटरव्यूज पे और जीटीओज पे. सो जस्ट डिवाइडेड. ऐसा ऐसा किसी ने नहीं बोला है आपको कि आप साइकोलॉजी भी एक दिन करोगे, जीटीओज भी एक दिन करोगे, फिर इंटरव्यूज भी एक दिन करोगे. सब कुछ एक दिन में नहीं होगा. उसको जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, कि रोज मैं एसएसबी के 2 पार्ट्स करूंगा या करूंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, तो गो फॉर साइकोलॉजी, गो फॉर जीटीओज, गो फॉर इंटरव्यूज, जैसे भी आपको मन करता है. 2 पार्ट्स में कोई 2 चीजें उठा लो एसएसबी की और उसको 1-1 घंटा दे दो. ठीक है. और उसके बाद सिमिलरली कंटिन्यू इट फॉर द टाइम व्हेन योर एसएसबी इज कमिंग. तब तक आप उसको कंटिन्यू करो. ठीक है जी. एंड यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. एंड सेम गोज फॉर योर एकेडमिक्स ऑल्सो, कि मान लो अगर आज आप मैथ्स कर रहे हैं, सो मान लो मैथ्स तो आपको रोज करना पड़ेगा गाइस. मैथ्स का कोई आपको ज्यादा ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग अगर आप आज करोगे कल नहीं करोगे आप भूल जाओगे. मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए. तो सो मेक श्योर कि एकेडमिक्स पार्ट में आप क्या करें. एकेडमिक्स पार्ट में आप बेसिकली यू गो फॉर वन थिंग, दैट इज रोज आपको मैथ्स तो करना है, रोज मैथमेटिक्स करना है. ठीक है. उसके बाद मान लो आपने प्लान कर लिया कि आज आई विल डू रीजनिंग. ठीक है. मंडे को आई विल डू दिस, मंडे को आई विल डू दिस. ठीक है. उसके बाद ट्यूसडे को आप क्या करेंगे? मैथ्स एंड फॉर एग्जाम्पल जीके. ठीक है. फिर वेंसडे को आप क्या करेंगे? मैथ्स एंड योर इंग्लिश. मतलब ऐसे ऐसे कर करके आप पूरा वीकली एक पैटर्न बना सकते हो कि हाउ डू आई कवर इट, हाउ डू आई कवर इट. जस्ट कंसिडर टू टॉपिक्स ईच एंड एवरी डे. सारे के सारे टॉपिक्स एक दिन में नहीं पढ़ने होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है. अपने एक गोल को ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको कंसिस्टेंटली करो. ठीक है. एक पैटर्न बनाओ, अपना एक डायरी बनाओ, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा या करूंगी. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट इज द शेड्यूल टू बी फॉलोड बाय द वर्किंग प्रोफेशनल्स. ठीक है. एक तो आपका 7-8 घंटे का जो आपका रहता है, 7 से 8 घंटे का जो आपका वर्क
वर्क प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन वर्क प्रोसेस रहता है, उसको तो अच्छी तरह से करो। उसको अच्छी तरह से इसलिए करो बिकॉज गाइज just don't do it for salary, just don't do it for granted, no no no, do not do that। आप रोज अपने वर्किंग या अपने किसी प्रोफेशनल जॉब में आप काम कर रहे हैं उसमें भी अपना 100% दो, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज उससे आपका दूसरों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, but your communication skills will also increase, you will know various ways to do a simple task, various ways to do one thing। So working to, if you are working, that's very well, that's very good also, but the thing is agar if you are working, do not take it for granted, do not take it for the fact that you are just doing it for salary, do not do that, because आपके वो जब आप जब कोई भी काम करते हो आप कुछ ना कुछ सीखते हो, एंड वही चीजें आपको एसएसबी में भी इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। एसएसबी इज नथिंग बट योर डेली रूटीन। अब रूटीन वाइज आप क्या क्या करते हैं वही आपको वहां जाके रिप्रेजेंट करना होता है। वो क्वालिटीज, आपकी क्वालिटीज कैसे इम्बाइब होती है, वी टॉक अबाउट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती हैं, वो रोज जो आप कर रहे होते हैं वही आपकी क्वालिटीज डेवलप करते हैं। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर वर्किंग इन योर कंपनी और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर गिविंग योर 100%, because that will improve your confidence, that will improve your communication skills, that will improve your multitasking ability, that will improve a lot of things, and those are the things that you really need to implement in your during your ssbs also, very very simple, everything is related to each other, all right। देन सिमिलरली गाइस आपका थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। डेली नेसेसिटीज में जब आप 10 से 12 घंटे दे रहे थे, यहाँ पे आप 9 आवर्स दीजिए, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, दैट्स इट। एसएसबी प्रेपरेशन के लिए आप 2 घंटे दे रहे थे, अब आप 1 आवर से 1.15 मिनट्स दो, दैट्स इट, रोज दो, but it all these things have to be followed daily, all these things have to be done in a very very consistent way। रोज करोगे फिर ही उसका आपको इफेक्ट दिखेगा, फिर ही उसको आपको इजी लगेगा। फिर अगर आप रोज करते रहोगे आपको पता चलेगा कि दिस इज समथिंग आई कैन रियली डू। अगर आपको आज 3 घंटे लग रहे हैं, एक हफ्ते के बाद उसी टास्क को 2 घंटे लगेंगे, टाइम रिड्यूस होता है, यू बिकम मल्टी टास्क, यू बिकम रियली रियली एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देन यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 5 hours, 3 to 5 hours, आई हैव टोल्ड यू द पैटर्न, जस्ट गो फॉर 2 subjects ईच एंड एवरी डे, जस्ट गो फॉर 2 subjects ईच एंड एवरी डे, ठीक है। मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन रख लो आप इंग्लिश का एक दिन, फिर मैथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशन रख लो रीजनिंग का एक दिन, फिर मैथ्स के साथ एक दिन कॉम्बिनेशन रख लो जीके का, फिर मैथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशन रख लो जीएस का। मैथ्स इसलिए बिकॉज मैथ्स इज समथिंग दैट एक्चुअली नीड्स योर डेली प्रैक्टिस। एंड येस, फिजिकल एक्टिविटी जो आपका पहले 1 आवर हो रहा था, जस्ट गो फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। यस गाइज, आपका एक एक मिनट काउंट होता है, एक एक मिनट काउंट होता है, ऑल राइट। So yes, just remember these points very, very well. The above mentioned tables are valid for both working and non-working professionals only if you prioritize your daily routine. अपना डायरी बनाओ और लिखो कि मुझे आज ये कवर करना है और मैं करके रहूंगा। उसको प्रायोरिटाइज करो और उसको एक एक करके कंप्लीट करो। All right, having a daily routine will make you disciplined, and yes, you will be a go-getter for rest of your life, not just for your SSB, for rest of your life. All right. Also, it will help you to accomplish your short-term and long-term goals simultaneously. Short-term goals क्या हो गया कि आप अपनी basic necessities पूरी कर रहे हैं। Long-term goals क्या हैं, जो आपने defense join करना है, आप किसी competitive के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका short-term goal तो हो ही रहा है accomplish, आपका long-term goal भी accomplish हो रहा है, अगर अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अगर आप अपनी डेली डेली कंसिस्टेंसी में अगर आप कोई काम करें, डिसिप्लिन्ड वे में कोई काम करें। ऑलराइट, यस यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, दैट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे पूरी जी जान लगा दो, रियली रियली वर्क हार्ड डे इन एंड डे आउट। enjoy your Sundays, ऐसा नहीं है that you just have to work and work and work, you have to get at least 1 day of rest to your body also, to your mind also, because संडे को अगर आप रेस्ट लोगे, अगले हफ्ते आपका पूरा का पूरा माइंड काम करेगा, पूरा का पूरा बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू आर गिविंग योर 100% इन ईच एंड एवरी टास्क, बट ऑन संडेज यू आर रिलैक्सिंग, you are relaxing with your friends, your family, yourself, you are doing your hobbies also, ठीक है। हॉबीज रोज करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हॉबीज तब करना होता है जब आपको टाइम मिलता है। सो मेक श्योर आप मंडे से सैटरडे दबा के करो, पढ़ाई करो, दबा के एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करो, या जो भी आप काम कर रहे हैं, बट संडेज को आप अपने माइंड को
टाइम दो, संडेज को आप अपनी बॉडी को भी टाइम दो, ठीक है। ऑल्सो डिवोट संडेज फॉर रिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स। संडे को टाइम आपके पास हर चीज के लिए हो जाता है, अगर आप टाइम बनाना चाहो तो ऑल्सो यू कैन गिव इट फॉर रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऑलराइट गाइज, सो यस, द लास्ट पॉइंट इज कीप योर जोश हाई ऑलवेज। चाहे किसी भी पार्ट के लिए, आपने डिफेंस में जाना है, आपने कहीं भी जाना है, कीप योर जोश हाई। ऑलराइट, बी करेजियस टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड अचीव देम। अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखो, बी करेजियस, ठीक है। एक बारी हारे तो बैठ मत जाओ, उसको फिर से जाओ, उसको फिर से स्ट्राइव हार्ड करो। बी courageous to follow your dreams and achieve them. You all have the potential to reach your goals. Believe me guys, you all have the potential to reach all of your goals, to reach all of your goals. Because what, you know what, because we human beings are basically limitless. We don't have any limits to us. We can do each and everything that we put our mind to. ठीक है जी. So with this, I will say that that's all for this video. Thank you so much for listening to this video. And yes, I will provide you with the PDF of this video also, because it's a very bright PDF. So अगर कभी भी if you feel low, just go through this PDF. It will boost your morale. And also guys, one more thing. Basically, a master interview course has been launched by Defense Mania, ठीक है, Defense Mania, and that is basically available on the Defense Mania mobile application. And yes, उसमें क्या है, part 1 is there and part 2 is there. Part 1 is there is for what, is basically for your SSB का interview. SSB का जो interview होता है उसको I am Vasudha Singh, I'm totally actually following it. I'm personally guiding you for your part 1, आपका SSB interview, as well as उसमें क्या करना है क्या नहीं, PIQ form, everything is being dealt. And yes, I'm giving you personal guidance. And yes, I'm also giving you 2 mock interviews. I will be conducting 2 mock interviews through a video call. All right, I'm already starting doing that. And that part second क्या होगा, आपका defense related, your defense related any information that is basically very very required in your SSB. If you want to enroll for the master interview course, there is a Google form in the description box. You can actually fill that up and Defense Mania team will call you. All right, ठीक है जी. And you can definitely get personal guidance from me, because I have appeared for defense exams a lot of times. I'm a 3 times recommended candidate by the services selection board. All right guys, so yes, thank you so much guys, thank you so much. And yes, I will definitely see you all in the next videos. Thank you so much. Bye bye.